I hope my voice is audible to you, and I'll share my screen as well. So I'm assuming that you're able to see the screen. Okay. So we'll have a quick revision and then we'll continue with the chapter. As in today, we are going to discuss about mitosis. Okay. So in the last lecture, I taught you about, we had an introduction about cell division. So whatever questions I ask you, you'll quickly start responding with the answers in the chat box. So quickly tell me which are the two types of cell division. Guys, please pay attention. Today we're going to discuss a very, very, very important topic. So please pay attention, and if you don't understand any part or anything, you'll ask me at the end. अभी के लिए मैं सिर्फ जितने क्वेश्चन पूछती हूँ सिर्फ उसके ही आंसर बताने हैं आपको, and you will not raise your hands. Okay, so as I told you, which are the two types of cell division? Just a minute, I need to open my chat. Oh, yeah, mitosis and meiosis. Very good. That's a very old joke that it hurts mitosis. Okay. Yeah, as I was talking about. Okay, so tell me, where does mitosis occur? Mitosis occurs in which cells? Very good, Saidam. Cheryl, you were the first one to answer. It occurs in the somatic cells and stem cells. And it's not stomatic, it's somatic, SOMATIC, somatic cells. Now quickly tell me, what are somatic cells? What are somatic cells? I'm sorry, what are somatic cells? I'm asking something. What are somatic cells? Ghatkopar Parth answered first, that is, all the cells except your reproductive cells are called the somatic cells. Okay, very good. So we know that mitosis occurs in somatic cells and meiosis will occur in the germ cells or the reproductive cells. Okay, now tell me, how many chromosomes do you have? How many chromosomes do you have? Very good. You have 46 chromosomes. That 46, people pay attention. You have 46 chromosomes, that is 23 pairs. Okay, आपके बॉडी में जितने भी सेल्स है, कोई भी सेल की मैं बात करूं तो सब में 46 क्रोमोसोम होगा. So please understand, when my body cells are performing mitosis, that time, how many chromosomes will be there in my cell? Okay, there are people answering 92, 44, 23. I mean, आपको 1 to 100 में जितने नंबर्स आते हैं आप सब कुछ टाइप कर रहे हो. I hope my screen is visible to you. But अभी तक मैंने पढ़ाना चालू नहीं किया, तो there is just a blank screen available. Okay. So I don't know what you people are answering. 84, 49. God knows कौन सा math पढ़ के आ रहे हो तुम लोग. Okay. So I am assuming ये तुम्हारा concept clear नहीं है. Stop answering in the chat box now. I know that you people don't know it. So I don't want you to answer anymore. I want everyone's eyes on the screen and I want everyone to be paying attention. Okay. Just a minute. Yeah. So as I was telling you that you have 46 chromosomes in your body. Okay. Everyone's eyes on the screen. You have 46 chromosomes in your body. Now, when I have to do mitosis, okay, जब मुझे mitosis करना है, that time mitosis will occur in my somatic cells. When I say somatic cells, that means all the cells of my body. Okay, I am saying mitosis, that means somatic cells, that means all the cells of my body. Okay, people, please switch off your videos. Yeah, so as I was telling you, आपके body में 46 chromosome है. Mitosis में you will maintain the number 46. कोई भी सेल डिविजन कर लो, आप मेंटेन करोगे क्रोमोसोमल नंबर 46. बिकॉज अगर क्रोमोसोम नंबर 46 मेंटेन नहीं रहेगा तो फिर आपका बॉडी ढंग से काम नहीं करेगा.
So everyone needs to remember this, that you have to maintain the number of the chromosome, that is 46. Okay, अभी मैं आपको एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दे रही हूं कि तुम्हारे बॉडी में जब माइटोसिस होता है, जब सेल डिवीजन होता है, so how does this occur? Okay, so everyone please pay attention over here. Now this is my cell. In my cell I have 46 chromosomes. तो सबसे पहले क्या होगा, 46 will duplicate. Okay, 46 का जेरोक्स बनेगा. सो अब मेरे सेल में इंस्टेड ऑफ 46 अभी होंगे 92, क्योंकि ड्यूप्लीकेशन हुआ है. ओके, क्योंकि ड्यूप्लीकेशन हुआ है, जेरोक्स बना है, करके 46 has turned into 92. नाउ तुम्हारे सेल में 92 क्रोमोसोम तुम्हें चलेंगे क्या? वेरी ऑब्वियसली नहीं चलेंगे. ओके, very very obviously you can't have 92 chromosomes in your body. So now what will happen is this 92 will further divide into two cells, giving you 46 chromosome each. Have you understood the basic simple mathematics over here? There is no rocket science, there is simple understanding. तुम्हारे पास 46 क्रोमोसोम है, मुझे 2 सेल बनाने हैं, तो सबसे पहले मैं 46 को डुप्लीकेट करके 92 बनाऊंगी और फिर उस 92 को डिवाइड करूंगी 46 में. ओके, दैट इज हाउ एट द एंड ऑफ द माइटोसिस आई विल हैव 2 cells which will have 46 chromosomes each. Okay, I hope this basic was very much clear. इसके बाद हम लोग को पूरा डिटेल में माइटोसिस पढ़ना है, बट अभी के लिए आपको ये बेसिक समझ में आना चाहिए कि तुम्हारे सेल में आपको 46 नंबर मेंटेन करना है. ओके, 46 मेंटेन करना है मतलब तुम्हारे पास है 46 का डुप्लीकेशन करेंगे 92 विल बी डिवाइडेड इनटू 46 ईच. I hope this is very much clear. So then I will continue. Okay, I can see a lot of people have put messages in the, what about the organelle? See, once again, anyone has any doubt, you have to ask me at the end of the lecture. Okay, right now, अच्छा, right now you just let me know तुम्हें 46, 92, 46 समझा या नहीं. 46, 92, 46. Okay, this is the basics. समझ गया? Very good. Now don't answer anything in the chat box. Someone had asked duplication क्यों हो रहा है? बेटा duplication नहीं होगा ना तो 46 खुद डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, अगर duplication नहीं होगा 46 will itself divide, एंड अगर 46 खुद डिवाइड होता है तो वो 23 बनेगा. बट तुम लोग 23 क्रोमोसोम चला सकते हो क्या बॉडी में? नहीं. तुम्हें कितना चाहिए? 46. Every species has to maintain a chromosomal number, and for human beings you are supposed to maintain the number 46. Okay, you can't decrease the chromosome, you can't increase the chromosome. ये 9th में आपने बहुत बार पढ़ा है, if the chromosomal number increases or decreases you will suffer from diseases. So that is the reason you have to maintain the number 46, and that is why there is duplication. How they duplicate, what happens, we'll understand now. अभी इतना तुमको समझ में आ गया, तो अब हम देखते हैं कि माइटोसिस में होता क्या है. ओके, चलो. So everyone's eyes on the screen, and now I'm not going to check the chat box, so don't put anything over there. मैं नहीं देखने वाली कि तुम लोग क्या मैसेज डाल रहे हो वहां पे. ओके, fine, cool. So let's start just a minute. Yeah. So let's start with mitosis. So mitosis occurs in the somatic cells and the stem cells. Okay. So somatic cells and stem cells divide by mitosis. Yeah. So somatic cells are all the cells of your body. Okay. And stem cells में especially तुम्हारा bone marrow एंड तुम्हारा एम्ब्रियोनिक सेल्स आएगा. स्टेम सेल्स अगर नहीं समझ में आता है तो अभी के लिए साइड में रख दो. देयर इज एन एंटायर चैप्टर जहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सेल बायोलॉजी में.
अभी के लिए you need to remember mitosis will occur in the somatic cell and in the stem cells. Okay. Now, mitosis is the cell division in which two identical daughter cells are produced by the division of one parent cell. Your one parent cell, okay, you have your one parent cell which will divide and give you two daughter cells. ये मैंने last time भी बताया था. You have one parent cell and this parent cell will divide into two daughter cells. Okay, parent cell के पास 46 क्रोमोसोम है, daughter cell के पास भी 46. ठीक है. So in mitosis, the cell division will happen in which you will get identical daughter cells. Identical, same to same. ठीक है. The most important aspect of mitosis is that the same normal chromosome number is maintained at each cell division. That is what I was shouting from when, that you will maintain the number 46. कुछ भी हो जाए आप मेंटेन करोगे नंबर 46 फॉर ह्यूमन बीइंग्स. अगर कोई और एनिमल है तो वो अपना नंबर मेंटेन करेगा. ठीक है. हम ह्यूमन बीइंग्स 46 मेंटेन करेंगे. So the most important aspect of mitosis is that the normal chromosome number is maintained, and the normal chromosome number is 46. ठीक है. ये देखो. So this is the parent cell. I want everyone's eyes on the screen and please pay attention. So, sorry, you have parent cell. सबसे पहले duplication होगा. अगर ड्यूप्लीकेशन नहीं होगा तो डिवाइड कैसे करेंगे. इसीलिए ड्यूप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन आई एम टेलिंग यू, ये बस एक बेसिक इमेज में एक्सप्लेनेशन है, इसके बाद पूरा डिटेल में पढ़ना है. सो सबसे पहले हम ड्यूप्लीकेशन करेंगे. ड्यूप्लीकेशन करने के बाद ये देखो ऐसे डिवाइड होगा. ठीक है. और आप देख रहे हो तुम्हारे पास दो डॉटर सेल होंगे जिनके पास है 46. ठीक है. यहां पे देखो ये 46 था. This was 46. डबल होके बना 92 आगे जाके डिवाइड हुआ into 46. Okay. This is what happens in mitosis. Now there is very important thing I want you to remember. Please note down that chromosome number is always represented by the letter. You people know this. It is always represented by the letter N. Okay. But chromosomes are always present in pairs. So that's why you write it as 2n. याद है आपको? Chromosome number is represented by the letter N. But chromosomes are always present in pair. That is the reason you call it 2n. Okay? अब ध्यान से सुनना मेरी बात. Very important terminology. Okay? So, N, अगर तुम्हारे बॉडी में n chromosomes है, if your body has n chromosome, then it will be called as haploid. What do you call it as? Haploid. Haploid. Hap का मतलब है half. That's why haploid. When you have n number of chromosome, it is called as haploid. And when you have 2n, it is called as diploid. Okay, it will be called as diploid. Diploid, die का मतलब है 2, इसीलिए diploid. I hope everyone remembers this. N haploid मतलब half है. 2n diploid. ठीक है. मतलब अगर मेरे बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स है तो it is diploid because 46 is 2n. No, so that is diploid. अगर मेरे पास 23 है तो I will call it as haploid. Okay, so I want everyone to remember this, that when you have n number of chromosome, it is called as haploid, and when you have 2n, it is called as diploid. आगे जाके कोई भी confusion नहीं होना चाहिए. सबको याद रहना चाहिए that when you have n, it is haploid, and when you have 2n, it is diploid.
ओके तो तुम्हारे पास अगर 46 क्रोमोसोम है तो तुम हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, चलो क्विकली. इफ यू हैव 1 second, yeah, if you have 46 you are diploid. Very good, very good. 46 is diploid. अगर तुम्हारे पास 23 है, 23 है तो तुम हो हैप्लॉइड. अगर तुम्हारे पास 23 है तो तुम हो हैप्लॉइड. समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, वापस सुनो मेरा क्वेश्चन. माइटोसिस में जब सेल डिवीजन होता है तुम्हारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? Mitosis, when cell division happens, how many chromosomes do you have? I don't know why you people are answering 92 because मैंने अब भी इतना एक्सप्लेन किया कि माइटोसिस में, स्टॉप आंसरिंग, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर कंफ्यूज्ड. माइटोसिस में सबसे पहले 46 डुप्लीकेट होगा टू गिव यू 92, बट बाद में 92 डिवाइड होगा ना 46 देने के लिए. तो तुम 92 क्यों बता रहे हो? आधे रास्ते तक क्यों जा रहे हो? पूरा रास्ता कंप्लीट करो ना. 46 you have, you will duplicate into 92 and 92 will be again divided into 46. तो at the end मिला क्या? 46. 92 नहीं, तुमको at the end मिला 46. That is 2n. That is diploid. Okay. I don't know what is the confusion out there, but whenever I'm asking you कि माइटोसिस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं सेल में, तो माइटोसिस में तुम्हारे पास होते हैं 46 क्रोमोसोम्स. ओके 92 नहीं होता. 92 होने के बाद आगे डिवीजन होता है, so it is 46. Don't confuse yourself. Okay. So once again my question to you is, माइटोसिस में तुम्हारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? माइटोसिस के एंड में तुम्हारे पास कितने क्रोमोसोम्स मिलते हैं? ओके नाउ पीपल आर आंसरिंग 46. ओके अच्छा वापस कोई, हाँ 46 डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है? 46 इज डिप्लॉयड और हैप्लॉयड? डिप्लॉयड. ओके ठीक है चलो, तो अभी तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो गए हैं. अभी हम लोग देखते हैं कि माइटोसिस होता कैसे है. ठीक है, नाउ स्टॉप पुटिंग मैसेजेस इन द चैट बॉक्स बिकॉज नाउ आई वांट एवरीवन पेइंग अटेंशन ऑन द स्क्रीन. ओके चलो, so let's continue. Mitosis is completed through two main steps. Okay, mitosis is completed through two main steps, and the two main steps are karyokinesis. I want everyone repeating with me. It's karyokinesis. That is the division of the nucleus. It's karyokinesis. That is सबसे पहले nucleus divide होता है. मतलब अगर ये मेरा सेल है, अगर मेरे सेल को डिवाइड होके 2 सेल बनना है तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है ना उसको डिवाइड होना पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहले द न्यूक्लियस विल डिवाइड, and when the nucleus divides it is called as karyokinesis. Nuclear division is karyokinesis. Okay, so the first step is karyokinesis, that is nuclear division. अब very obvious सी बात है, सबसे पहले अगर न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो सेकेंड चीज जो डिवाइड होगी वो है साइटोप्लाज्म, and that step is called as cytokinesis. Okay, so the first step is karyokinesis and the second step is cytokinesis. Okay, I hope everyone can see the screen. Okay, now Saidam Madonka, I don't know what some people can see the screen, some people cannot. I don't know what's the issue. Okay, it's visible to everyone. Cool. So mitosis is completed through which two steps? That is karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis, karyo का मतलब है न्यूक्लियर and kinesis का मतलब है डिवीजन.
तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन। कौन डिवाइड होगा कैरियोकाइनेसिस में? न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ठीक है। एंड साइटोकाइनेसिस में कौन डिवाइड होगा? साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिविजन. So I hope everyone is sorted with this. So mitosis occurs in which two steps? Mitosis will occur in the two steps, that is karyokinesis and cytokinesis. Okay. I guess there is a lot of problem with the. I'm sharing the screen again so that आपको सबको स्क्रीन दिखे. Now I'm assuming कि सबको स्क्रीन दिख रहा है. Thus that's it. अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपके एंड पे कोई इशू होगा. So as I was talking about, mitosis occurs in two steps, that is karyokinesis and cytokinesis. I want everyone to answer. Sorry. I want everyone to answer that which are the two steps in which mitosis occurs. Quickly. Mitosis occurs in which two steps? Karyokinesis and cytokinesis. Tell me what is karyokinesis. Karyokinesis मतलब क्या डिवाइड हो रहा है? Nucleus. Very good. Karyokinesis is nuclear division and cytokinesis is cytoplasmic division. Cytokinesis is cytoplasmic division. Chalo, very good. Everyone's eyes on the screen. Karyokinesis is completed through 4 steps. Karyokinesis is completed through 4 steps. And the 4 steps are prophase. I want everyone repeating with me. Prophase, metaphase, anaphase, telophase. The 4 phases are prophase, metaphase, anaphase, telophase. So karyokinesis will occur in which 4 steps? That is prophase, metaphase, anaphase and telophase. ठीक है? Now let us understand these phases one by one. So everyone with me, that your karyokinesis, that is nuclear division, will occur in how many phases? It will occur in 4 phases. Okay, it will occur in 4 phases. And which are the 4 phases, everyone? Prophase, metaphase, anaphase and telophase. Very good. Okay, chalo. So we'll continue. So which is the first phase? That is the prophase. Everyone's eyes on the screen. Stop putting messages in the chat box. So now let us talk about the prophase. Now in prophase, condensation of basically thin thread like chromosome starts. Pay attention everyone. सबसे पहले क्या होता है, तुम्हारा जो सेल है, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो, दिस इज योर सेल, this is a cell, this is a cell membrane. Okay, ये सब मैंने उस दिन बताया था आपको. This is nucleus and nucleus के अंदर these thin network जो है, thin thread like network, ये जो तुम्हारा क्रोमोसोमल नेटवर्क है, it starts condensing. Okay, ऐसा जो thin thread like network है, it will condense and it will give you thick chromosome. ऐसे. Okay, वो condense हो जाते हैं. Once again, I am repeating, we are in the prophase. What happens in the prophase? In prophase, condensation of basically thin thread like chromosomes starts. And then due to this, they become short and thick. Okay, due to this, they become short and thick. And later, they start to appear along with the pair of the sister chromatid. I want everyone's eyes on the screen. In prophase, condensation of basically thin thread like chromosome starts. Okay, चलो वापस देखते हैं.
कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम का मतलब है तुम्हारे सेल में पहले ना क्रोमोसोम जो है वो थिन नेटवर्क ऑफ थ्रेड रहता है. ओके ये येलो कलर का जो थिन नेटवर्क ऑफ थ्रेड है, आपने फिरकी का मांझा देखा रहेगा. ओके फिरकी में जो मांझा रहता है, अगर मैं उस मांझे को अच्छे से वाइंड कर लूं फिरकी पे, then it will appear short and thick. The same thing. So in the prophase, condensation of basically thin thread like chromosome starts. Due to this, they become short and thick, and they start to appear along with the pair of their sister chromatid. मैंने उस दिन भी बताया था, ये जब ऐसे अकेला रहता है, so that is a chromosome. Okay, see, I want everyone's eyes on the screen. Give me a minute. Yeah. So this is how your chromosome normally appears. Okay. But when they get their sister chromatid, they will appear in the position of an X. फिर वो ऐसा X के जैसा दिखेगा. Okay. Can you see that? पहले वो अकेला था, but अभी उसको sister chromatid मिला, तो वो X की तरह दिखने लगा है. Okay. So sister chromatid is nothing but the duplication. I hope you are understanding this. सिस्टर क्रोमैटिड आना का मतलब है ड्यूप्लीकेशन हो रहा है, मतलब 46 इज टर्निंग इनटू 92. यहाँ पे देयर वर 46 क्रोमोसोम, बट यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड के साथ कितना बन गया? 92. ठीक है. सो आप पूछ रहे थे ना ड्यूप्लीकेशन, तो ऐसे होता है ड्यूप्लीकेशन. Okay, so once again I am repeating, in prophase, condensation of basically thin thread like chromosome starts. Due to this, they appear short and thick, and they start to appear with their sister chromatids. Okay, they will start to appear with their sister chromatids. I hope everyone has understood this. So we were talking about prophase, that is the first phase. Okay. अच्छा, कंडेंसेशन का मतलब है वो स्मॉलर साइज में कन्वर्ट हो रहा है. ओके सबसे पहले कैसा था? वो थिन नेटवर्क ऑफ थ्रेड था, बट अभी कैसे वो छोटे छोटे सेल्स बन गए, छोटे छोटे शॉर्ट एंड थिक क्रोमोसोम बन गए, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन. ओके जैसे कि तुम्हारे टेलीफोन का वायर, तुम अगर टेलीफोन का रिसीवर उठाते हो तो वायर खींचता है, ठीक है, और अगर आप रिसीवर को रख देते हो तो वापस वो ऐसा कॉइल हो जाता है. ठीक है, तो वो जो कॉइलिंग होती है उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन. नॉर्मली इफ आई पिक द रिसीवर, द कॉइल वुड लुक लाइक दिस लॉन्ग, but then when I keep the receiver, it will start coiling like this. So that coiling is nothing but called as condensation. So your network of chromosome, which is thin thread like, will condense, it will coil, and it will become short and thick, and it will appear with their sister chromatid. Okay, if anyone has anything you can ask, or else I will continue. So once again I am repeating, we are doing mitosis. In mitosis occurs in two phases, that is karyokinases and cytokinases. Karyokinases is nuclear division, cytokinases is cytoplasmic division. Okay, now Takshila, Preet, I will answer. Let me come to the end of the lecture. So the center part is the nucleus over here. From where do they get their sister chromatid? They make the sister chromatid. They don't get it from anywhere. Your cell has the capacity to make it. Okay, so they will make the sister chromatid. So now, once again, please pay attention, everyone. We are doing mitosis. In mitosis occurs with two stages, that is karyokinases and cytokinases. Karyokinases is nuclear division, and cytokinases is cytoplasmic division. Karyokinases occurs in four phases. Four phases are prophase, metaphase, anaphase, telophase. Okay, we are in the prophase.
the first thing that happens in the prophase is your thin thread like chromatin fibers will condense to give you short and thick chromosome, and they will appear with their sister chromatid. ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया थी कि क्यों सिस्टर है, क्यों डॉटर है. हम कभी ब्रदर सन नहीं बोलते. ओके, सो डोंट बॉदर विद दैट. नाउ once again they will appear with their sister chromatids. Yes, I will repeat the prophase, so please listen to me. We are in the first step of the prophase. Prophase में क्या होता है, तुम्हारा thin thread like network, this thin thread like network which you can see here, this will condense to give you short thick chromosome, and when they condense to give you short thick chromosome, later they will appear with their sister chromatids. Okay, I hope everyone has understood sister chromatids. So that means तुम्हारा 46 has turned into 92. Okay, so now let us go ahead. That was the first thing that happened in prophase. अभी और आगे क्या होता है देखते हैं. आपको पता है, मैंने पढ़ाया था, there is something called as centriole. Okay, last lecture I told you there is something called as centriole. So now what happens is the centriole will also duplicate. Centriole भी duplicate करेगा. Okay, centriole will duplicate. Can you see the duplication? Can you see the duplication on the screen? ये देखो, centriole duplicated. एक से दो बन गए. Okay, so centriole duplicates and they start moving to the opposite poles of the cell. They start moving to the opposite poles of the cell. I hope everyone can understand. Once again, I will repeat. The centriole duplicates. Okay, ये देखो, पहले एक था अभी दो बन गया है. पहले एक था अभी दो बन गया है. पहले एक था अभी दो बन गया है. So centriole duplicates and it starts moving to the opposite poles of the cell. It starts moving to the opposite poles of the cell. I hope everyone understood this. So this is the second thing which happens in the prophase. Centriole duplicates and starts moving to the opposite poles of the cell. I hope everyone can see this. Okay. Now the third thing. Okay, the third thing that will happen in the prophase is nuclear membrane and nucleolus. If you can see, this is the nuclear membrane. आपको याद है ना, न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, एंड न्यूक्लियस के पास उसका खुद का न्यूक्लियस होता है, पर्सनल न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस. ओके, न्यूक्लियस हैज इट्स ओन पर्सनल न्यूक्लियस विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस. ठीक है, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस विल स्टार्ट टू डिसअपियर. समझ में आ रहा है? Nuclear membrane and nucleolus will start to disappear. Sorry. So I hope everyone has understood this. Okay. Once again I will repeat. हम प्रोफेज में है. सबसे पहले प्रोफेज में क्या हुआ? तुम्हारा thin thread like chromatin fibers condensed to give you short, thick chromosome. Okay, it condensed to give you short, thick chromosome, and they appeared with their sister chromatid. They appeared with their sister chromatid. That was the first thing that happened in prophase. Second thing happened was centriole duplicated. Centriole duplicated and Vikroli, Rutuja, you are asking me to give you the remote control of the screen. I have declined the request thrice. Now don't ask again. So, sister chromatid. 1 second. घाटकोपर अथर्व 46 सेंट्रियोल डुप्लीकेट. ये बेटा मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया. आप क्या बोल रहे हो? And Vikroli, yes, I'll answer your question.
सेंट्रियोल एक ही है अपने पास। 46 सेंट्रियोल किधर से आया? मैंने 46 बताया क्या स्क्रीन पे? तुम अपने जेब से मत डालो ना सेंट्रियोल्स। एक ही सेंट्रियोल है मेरे पास, तो मैं एक को ही डुप्लीकेट करके दो बनाएगी। So centriole duplicates and starts moving to the opposite poles of the cell. And विलेपार्ले जितेंद्र, अगर आपको न्यूक्लियस को तिल बुलाना है तो फिर आपको एग्जाम में 0 मिलेगा। अगर आपको 0 चाहिए तो आपको जो चाहिए आप बुला सकते हो उसको, ठीक है? सो तुम्हारा न्यूक्लियस जो आपको तिल लगता है, इट विल डिसअपियर. Nucleolus and nuclear membrane will start disappearing. Someone asked me why it is disappearing. The reason is, अगर बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं करेगा तो न्यूक्लियस डिवाइड कैसे होगा, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट कैसे होगा? ठीक है, तो इसीलिए न्यूक्लियस को डिवाइड करना है, करके हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस को डिसअपियर करवा रहे हैं। और आप चिंता मत करो, मैं डिसअपियर कराऊंगी, बाद में उसको वापस अपीयर भी करवा दूंगी, डोंट वरी। ओके, सो वंस अगेन वी आर इन विच फेज? अभी फटाफट आंसर करो क्वेश्चन, बताओ कौन से फेज में है हम? प्रोफेज। ओके, घाटकोपर अथर्व, वेरी गुड, वी आर इन द प्रोफेज। प्रोफेज में सबसे पहले क्या होता है? फटाफट टाइप करके टाइपिंग स्किल्स बताओ अभी, क्या होता है प्रोफेज में सबसे पहले? कंडेंसेशन। किसका? तुम्हारा? किसका कंडेंसेशन? कंडेंसेशन ऑफ थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स, कंडेंसेशन ऑफ थिन थ्रेड लाइक क्रोमैटिन फाइबर्स इनटू शॉर्ट thick chromosome. They will condense to give you short thick chromosome. Now tell me what else will happen? They will appear with their what? With their sister chromatids. They will appear with their sister chromatids. Okay, now what was the second thing that happened? Second thing, who duplicated? Centriole duplicates. JB Nagar, someone answered, I missed the name. Okay, centriole will duplicate and it will start moving to the opposite poles of the cell. It will start moving to the opposite poles of the cell. Very good. And which is the third thing that is happening? Third thing, the nuclear membrane and the nucleus will start to disappear. Okay, the nuclear membrane and the nucleolus will start to disappear. Beta, centriole is an organelle which helps in cell division. ठीक है, आगे जाके आपको पता चलेगा कि वो ऑपोजिट पोल पे क्यों गया है। सेंट्रियोल का कुछ काम है, इसीलिए मैंने उसको वहां भेजा है। ओके, मैंने उसको घूमने के लिए नहीं भेजा। ओके, चलो, सो सबको समझ में आया? कौन डिसअपियर? शुभम घाटकोपर, क्या पूछ रहे हो? व्हाई डज इट डिसअपियर? अभी तो बताया डिसअपियर नहीं होगा तो डिवाइड कैसे होगा न्यूक्लियस? टाइम पास करने के लिए तो मैं बता नहीं रही ना डिसअपियर अपीयर, जादू तो दिखा नहीं रही मैं यहाँ पे। Okay, so we are in the third step. We are doing the third thing, that is nuclear membrane and nucleolus will begin to disappear and your prophase is done. Okay, this was your prophase. Now we've moved down to the next phase, that is metaphase. Okay, chalo. Any doubt with prophase? Then you can ask me. No doubt with prophase? I will continue with the metaphase. Okay, now stop answering in the chat box and pay attention on your screen. So we are in the metaphase now. अभी देखते हैं मेटाफेज में क्या होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर्स। अब सुनो मेरी बात, प्रोफेज में इट बिगैन टू डिसअपियर, इन मेटाफेज इट कंप्लीटली डिसअपियर्ड। ओके, यू नीड टू रिमेंबर दीज डिफरेंसेस। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस बिगैन टू डिसअपियर, इन मेटाफेज इट कंप्लीटली डिसअपियर्ड। समझ में आया? सो सबसे पहले आप ये मेंशन करोगे कि मेटाफेज में इट कंप्लीटली डिसअपियर्स। ओके, चलो, नाउ व्हाट इज द सेकंड थिंग दैट हैपेंस इन द मेटाफेज? Chromosome complete their condensation and become
clearly visible along with their sister chromatid. In prophase, they were appearing with their sister chromatid, but yahan pe in metaphase, they are clearly visible with their sister chromatid. Understand? To be appearing and to be clearly visible, there is a difference. Okay, so in prophase it began to appear with the sister chromatid, but in metaphase it is clearly visible with the sister chromatid. ठीक है, वापस बताती हूं, मेटाफेज में सबसे पहले न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन completely disappeared, and it became clearly visible with their sister chromatid. It became clearly visible along with their sister chromatid. ये हुआ मेटाफेज में. अब देखते हैं आगे क्या होता है. ऑल द क्रोमोसोम्स, वो जो तुम्हारे क्रोमोसोम है जो अपनी अपनी बहनों के साथ अपीयर हुए हैं, जो तुम्हारे सिस्टर क्रोमैटिड बन गए थे, ठीक है, मतलब तुम्हारे पास अभी कितना 92 क्रोमोसोम है. वापस याद दिलवा देती हूँ, सिस्टर क्रोमैटिड के साथ अपीयर करने का मतलब है 46 हैज ड्यूप्लीकेटेड इनटू 92, तब जाके तुम्हारे क्रोमोसोम को अपनी बहन मिली थी, तो वो सिस्टर क्रोमैटिड अपीयर हुआ था. ठीक है, तो अब ये सारे के सारे तुम्हारे 92 क्रोमोसोम विल अरेंज इन अ पैरेलल पोजीशन टू द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल. कैन यू सी दैट? दे हैव अरेंज्ड इन अ पैरेलल लाइन. तुम लोग भी ऐसे लाइन में कभी खड़े नहीं रहते हो, वैसे तुम्हारे क्रोमोसोम एक लाइन में पैरेलली खड़े हो जाते हैं on the equatorial plane of the cell. When I say equatorial plane, that means I am assuming an equator. I am assuming an equator. This is my equator. Okay, so I am assuming the equator, and my chromosomes have arranged parallel on that equator. Okay, so once again I am repeating that we are in the metaphase. Metaphase में सबसे पहले your nuclear membrane and nucleolus completely disappeared. Second thing was they were completely visible with their sister chromatid. Third thing is all the chromosomes arranged in a parallel line to the equatorial plane of the cell. Okay, so this is what happened in metaphase. They all arrange in the equatorial plane of the cell. Okay, now what happens is special type of flexible proteins. Okay, special type of flexible protein fibers are formed from centromere of each chromosome and both the centrioles. If you remember, तुम्हारे पास सेंट्रियोल था, ठीक है, सॉरी, तुम्हारे पास सेंट्रियोल था. अब देखो वो सेंट्रियोल से स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स बन रहे हैं. ओके, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन को स्पिंडल फाइबर बोलेंगे. ओके, फ्लेक्सिबल प्रोटीन, ये फाइबर का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रोटीन का बना है. फ्लेक्सिबल बिकॉज दे कैन कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स व्हाई दे आर फ्लेक्सिबल. इनको स्पिंडल फाइबर्स क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इफ यू नो, दिस इज व्हाट इज अ स्पिंडल शेप. ओके, समथिंग अपीयर्स इन दिस शेप इज कॉल्ड एज अ स्पिंडल. तो अगर आप नोटिस करो, तुम्हारा जो वो फाइबर्स है वो ऐसे स्पिंडल की पोजीशन में है. That's why they are called as spindle fibers. I hope this is very much clear to you. So special type of flexible protein fibers, that is spindle fibers, are formed between the centromere. Centromere मतलब क्या? तुम्हारे जो क्रोमोसोम होते हैं ना, उसका जो सेंटर होता है जहां पे वो अटैच्ड होते हैं, उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं. So if this is my chromosome, this point of attachment is the centromere. So spindle fibers will be formed from the centromere
टू द सेंट्रियोल. ओके, अब पता चला सेंट्रियोल इतना काम का क्यों है, क्योंकि वो स्पिंडल फाइबर बनाने के काम आता है. स्पिंडल फाइबर क्यों काम के है समझेगा. ओके, सो वी आर इन द मेटाफेज. मेटाफेज में अभी क्या हो रहा है, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स दैट इज स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड between the centromere and the centriole. Okay, it is formed between the centromere and the centriole. I hope this is very much clear with you. So that is what happened in the metaphase. So now I hope everyone is very clear with metaphase. क्या हो रहा था metaphase में सबसे पहले. अच्छा, अभी तुम लोग मुझे बताओ metaphase में सबसे पहले क्या हुआ. The lecture will get over at 7 o'clock. There are people who are saying bye. So it is totally up to you. आपको lecture में बैठना है नहीं बैठना है. 6 to 7 तक lecture होता है, तो आपको नहीं पढ़ना तो आप मत पढ़िए. So yes, so Shubham Sharma from Ghatkopar had answered first, that is the nuclear membrane and the nucleolus completely disappears. Very. So as I told you, the first thing happened was the nuclear membrane and nucleolus completely disappeared. Second thing was they appeared, they were clearly visible with their sister chromatid. What was the third thing? What was the third thing? Just a minute. They become clearly visible with the sister chromatid. Then the third thing is, yes, very good. The chromosomes are arranged parallel to the equatorial plane of the cell. Very good. And what was the fourth thing? Fourth thing was the spindle fibers appeared. Okay. The spindle fibers are formed. From where are they formed? They are formed from the centriole to the centromere of the chromosome. Okay. It is formed from the centriole to the centromere of the chromosome. That is what happened in your metaphase. So now for today, we will stop over here. That is, you have your prophase and metaphase. अब आपको जो भी doubts है आप chat box में पूछिए. If the nuclear membrane is disappear, then when will the nucleoplasm will mix? DN Nagar Amog, I did not understand your question. Homework will be sent to you on your WhatsApp, don't worry. Explain centriole. Okay, centriole is basically the structure जो आपको screen पे दिख रहा है. ये देखो मैं circle. Okay, 1 second. I'll just. Centriole is the structure this which will help in forming spindle fibers. और ये स्पिंडल फाइबर्स क्यों इतने काम के हैं? स्पिंडल फाइबर्स क्यों इतने काम के? बिकॉज दे हेल्प इन डिविजन. वो आपको एनाफेज में पता चलेगा. ओके, हाउ व्हेन विल इंटरफेज कम? आपके टेक्स्ट बुक में हम इंटरफेज के बारे में नहीं डिस्कस करते. इंटरफेज बेसिकली अकर्स बिफोर सेल डिविजन. What happens to other cell organelle during the process? Okay, so the other cell organelles no, वो randomly divide हो जाते हैं. Okay, वो randomly divide हो जाते हैं और फिर बाद में एक सेल अच्छे से बन गया, उसके बाद जो भी organelle उसके पास नहीं होगा वो बना लेगा. ठीक है, उसका कोई सेट रूल नहीं है कि कैसे डिवाइड होगा. In real life, when does the parent cell gets divide? आपके बॉडी में अभी भी right now also when you are listening to me, your cells are dividing. Yes, they constantly keep on dividing. Rather, आपके जो RBCs होते हैं, every minute they keep dividing. Why am I not audible? Don't the cells become smaller and smaller? अरे बेटा smaller and smaller क्यों होगा? वो divide होता है, but cell वापस grow होगा ना? Why do membrane and nucleolus disappear? बेटा disappear नहीं होगा तो फिर nucleus divide कैसे होगा? अगर किसी चीज को membrane होगी तो membrane के साथ उसको divide नहीं कर सकते हम. That is the reason. Examples of somatic cell. आपका body का, शरीर का हर एक cell somatic cell है. ठीक है, तुम्हारे body में तुम्हारा hands, eyes, ears, nose, everything is your somatic cell. ठीक है.
सेंट्रोमियर मीन, सेंट्रोमियर इज, अच्छा हम लोग ने जब क्रोमोसोम का पार्ट पढ़ा था तभी पढ़ा ना, सेंट्रोमियर इज द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम, जहां पे वो अटैच्ड रहता है सिस्टर क्रोमैटिड के साथ। यूट्यूब पे जाके वो वीडियो चेक कर लेना। Where is centriole located? Centriole is there in the cytoplasm, outside the nucleus. Can you explain the second part of prophase? Second part of prophase मतलब प्रोफेज में क्या क्या हुआ? प्रोफेज में सबसे पहले तुम्हारा, हाँ ओके, प्रोफेज में सबसे पहले तुम्हारे जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, दे कंडेंस, ओके, दे कंडेंस, they start condensing to appear short and thick chromosome, and they will start appearing with their sister chromatid. That is the first thing. Then second thing in your prophase is, what is the second thing? Can you people remind me? I'll give you the homework, beta. Don't worry. आपको diagram, return part सब मिलेगा. Centriole duplicates. Very good. The centriole duplicates and it starts moving to the opposite poles of the cell. Divide नहीं, duplicate होता है. And what was the third thing? अरे बेटा, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज मेटाफेज हो रहा है. तो कैरियोकाइनेसिस doesn't occur between प्रोफेज मेटाफेज. ओके, कैरियोकाइनेसिस के अंडर प्रोफेज और मेटाफेज है. आप कंफ्यूज हो रहे हो. You can go and check the YouTube video again if you have any doubts with the prophase metaphase. Okay.